Jain, all of you. Jain, sir. All of you again welcome to our SPI entrance exam preparation course 2024. Today is date 26. So listen today's schedule carefully, both online and offline students. Now here is the first period of math, which will be taken by our Kishore sir on statistic. Then next period is of our English, and after that there will be the science period, which will conduct by our science teacher Datta Pawar sir. From today he will start the biological chapters, life's internal secret, and last period is of our guest lecture by Professor Naneshwar Patil sir. He will solve some of your doubts and tell something new to you. And this is the overall schedule of morning session. In afternoon session, as you know that there will be our test on English. This is the second test of English. ऑनलाइन स्टूडेंट जो है इनके पास पेपर जो है 11:30 बजे तक पहुंच जाएंगे. उन्होंने क्या करना है, हमारे जो क्लासेस खत्म होते हैं 12:30 के बाद उसका प्रिंट आउट निकालना है, और जो टाइम आपको दिया है 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक ये टाइमिंग है हमारा पेपर सॉल्विंग का, बोथ फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. उसी समय आपको ये पेपर सॉल्व करना है. जिनके पास OMR सीट नहीं है, OMR सीट भी कल मैंने भेजी थी, OMR की भी आपने 3 कॉपीज निकालना है. इसके बाद हमारे और भी एक टेस्ट होने वाला है 26 को. तो एज यूजुअल टुमारो इज आवर कल्चरल इवेंट इन द नाइट. तो ऑनलाइन बच्चे भी यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं. हो सकता है हम इसका लाइव टेलीकास्ट भी करेंगे या उसका वीडियो आप तक पहुंच जाएगा. तो दिस इज ओवरऑल शेड्यूल ऑफ टुडेज. नाउ वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट पीरियड विद किशोर सर. Thank you, sir. Good morning to all. Good morning, sir. Our today's topic is statistic. Statistic is one of the branch of mathematics that deals with the information collected in the form of numericals for specific purpose. It is simply a branch of mathematics in which we collect the numerical information for the specific purpose. For example, government is supposed to run certain schemes. Then the Prime Minister of India, suppose Indian government is supposed to run certain schemes for the peoples who are below poverty level. So for that, they are supposed to collect the information about the population in India. For that purpose, they pass the guidelines. Then step by step the information is collected and that information is passed to the upper level. At the upper level the information is diagnosed, and according to the information collected they make the plans for the peoples who are below poverty level. Means in statistics simply the information is collected. There are basic terms in the statistic. The very first is the data. Data is what? Data is the meaningful information collected for specific purpose. Any information is not said to be a data. A meaningful information is said to be a data which is supposed to be collected for specific purpose. There is a specific purpose behind collecting the data information. That information is called as the data. Data is of two types. One is the primary data and second is the secondary data. Primary data is the information which we collect personally. The information which we collect personally. For example, a census is there. After every 10 years there is a census. You know census? Population counting. In India, after every 10 years there is a census. What happens in case of census? The government employees goes door to door and collect the information from the families, that how many family members are in the family, out of them how many are children, how many are above 18, how many are senior citizens, how many of them they are working, what work they are doing, what is their income, how many males and females are there in the family. This type of information the employees collect personally. Okay, so this information is called as the primary data. Now what happened? The employees
collect the information and give the data to the upper level. Now the officers at upper level use that information for certain purpose. Means officers didn't collect the information personally, but they use the information already collected by someone. That is called as the secondary data. Secondary data means what? If we use the information already collected by someone, किसी और ने कलेक्ट किया हुआ इंफॉर्मेशन अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी डेटा. सपोज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल वांट टू नो the scores of the student, that in which range how many students belongs according to the percentage 50 to 60% में उनके स्कूल के कितने बॉयज है गर्ल्स है, 70 to 80% परसेंटेज मिलने वाले कितने बॉयज गर्ल्स है, 80 to 90, 90 to 100. This type of information the principal of the school wants. Then what the principal of the school will do? He will pass the orders to the supervisor that I want this information. Then supervisor will pass the order, will collect the information from the student. So the information collected by the class teacher is the primary data. Then class teacher will submit that data into the to the supervisor. Then supervisor will do something on that data and pass that data to the principal of the school. Now here the data used by supervisor or the principal of the school was not collected by them personally. ये जो डेटा है वो उन्होंने पर्सनली कलेक्ट किया नहीं है, तो दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज द सेंट्रल टेंडेंसी secondary data. This type of information is called as the secondary data. Now what purpose behind collecting this data? What is the purpose behind collecting this data by the principal? Principal is supposed to launch some remedial teachings. Principal को कुछ ऐसा लगा होगा कि हमारे स्कूल के कुछ बच्चे 60% के बिलो का रेंज ज्यादा है, तो उनके माइंड में कुछ पॉलिसी आई होगी कि हमें ये जो 60% बिलो जो स्टूडेंट है इन्हें हमको 70% के अबव 80% के अबव लाना है. तो इसके लिए इन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया. मीन्स ये जो इंफॉर्मेशन है ये स्पेसिफिक पर्पज से ही कलेक्ट की गई है, तो दैट इज कॉल्ड एज द डेटा. नाउ देयर व्हाट हु इज द फाउंडर ऑफ द स्टैटिस्टिक? The great mathematician Francis Galton, 1822 to 1911 is the period of his contribution. He contributed a lot in the field of statistics. The statistic is used in agriculture, education, biotechnology, botany, physics, chemistry, sociology, administration, commerce, medicine. There are lot of fields where the statistic is used, and this branch of the mathematics was invented, or in which who contributed a lot is the mathematician Francis Galton, whose period is 1822 to 1911. Okay. You know, nowadays we are using biometric, fingerprint or scan. When we update the Aadhaar, or there is a biometric in our office also for the daily attendance of the staff. Okay. This method was already discovered by the great mathematician Francis Galton. He discovered that no two persons have the same fingerprints. No two persons have the same fingerprints. He found this or discovered this with the help of statistics. He collected information from number of people and recorded that the backgrounds, financial situations like dislikes, health, etc. on the large scale,
At that time, it was known that the fingerprints of different people are different. He collected the fingerprints of large number of people and invented them in the classification, and he judged there that no two peoples have the same fingerprints. There is again term used in the statistic. First we have seen the data, primary data, secondary data, then the score. Each number in the given information is called as the score. सभी को पता है, 10th क्लास में हुआ है score. Score is the number in the information. Whatever the numbers we collect in the information, suppose we collect the percentage of students, then each student's percentage is the score. And next is the frequency. Frequency means how many times, suppose in a class of 45 students, 15 student scored 72% marks, means 72 ये जो नंबर है ये 15 टाइम्स हमारे डेटा में हमें ऑब्जर्व होगा. तो 72 का जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या होगा, 15. 15 means frequency means what? Simply how many times the score is seen in the given information or given data. एक पर्टिकुलर डेटा पर्टिकुलर स्कोर हमारे डेटा में कितनी बार ऑब्जर्व हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट डेटा. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू सी हियर इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. एनी डेटा accumulate around certain standard number. कोई भी डेटा अगर होता है तो वो डेटा जो होता है वो एक किसी स्पेसिफिक नंबर के अराउंड आगे पीछे accumulated हुआ हमें दिखाई देता है, और that number is called as the central we can say it as average, mean or median. That number represent the complete data. अभी आपके क्लास में भी कोई कैप्टन होता है तो कुछ अगर आपको इंस्ट्रक्शन पास करने होते हैं तो डायरेक्टली क्लास टीचर क्या बोलेंगे, किसको कॉल करेंगे, कैप्टन को. कैप्टन इज कॉल्ड, और देयर विल बी अ मीटिंग ऑफ कैप्टन्स इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस एंड दे विल पास द इंस्ट्रक्शन टू द क्लास दैट व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. ओके, तो क्लास टीचर कैप्टन को बुलाएगा, मतलब कैप्टन इज द रिप्रेजेंटेटिव. पूरा क्लास बुलाने की जरूरत नहीं है, बट he will act as a complete class. जो he or she, whoever is there, he or she will act as a complete class. So that is the representative. We call it as a representative. Similarly, finding the mean, mode and median or average is nothing but finding a number from the given data that represent the complete data, and that is called as the measure of central tendency. Measure of central tendency means simply finding a number which represents the complete data. We have seen how to find the average. Average का फॉर्मूला पता है सभी को. Average is equal to sum of all scores upon number of scores. That is the formula for the average, sum of all scores divided by number of scores. इससे भी हम सेंट्रल टेंडेंसी किसी भी डेटा का फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके बाद में मीन हमने पढ़ा है. मीन एंड एवरेज हैज द सेम मीनिंग. मीन, एवरेज, मोड एंड मीडियन, सभी का मीनिंग एक ही है. इन सभी में हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड नंबर फाइंड आउट करते हैं जो कंप्लीट डेटा को रिप्रेजेंट करने जा रहा होता है. तो मीन के भी कुछ फॉर्मूले आपके पास है. मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, मीन बाय अज्यूम मीन मेथड, ये सभी फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए. आपको वो फॉर्मूले यहाँ पर यूज नहीं करने हैं, लेकिन उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए. उसके बाद में हमने देखा है कि मोड पता है सभी को, मीडियन पता है. मोड किसे कहते हैं, मोड किसे कहते हैं,
the observation that occurred maximum times. ऐसा ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उसे कहा जाता है मोड. एंड मीडियन इज द ऑब्जर्वेशन दैट डिवाइड्स the given data into two equal parts after arranging in ascending or descending order. हमें मीन या मोड, मीडियन, ये तीनों भी अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इफ द नंबर ऑफ स्कोर्स आर लेस. अगर नंबर ऑफ स्कोर्स लेस है तो हमें उन्हें उस फॉर्मेट में अरेंज करना है. अगर नंबर ऑफ स्कोर्स ज्यादा है तो हमें उसमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का भी आपने देखा है, वो भी करना है. ओके, नाउ हियर वी सी सम एग्जांपल्स डिपेंडिंग ऑन द एवरेज. द वेरी फर्स्ट इज एग्जांपल नंबर 1. द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 20 एम्प्लॉइज. Salary of 20 employees is rupees 1,500 if the manager's salary is added to them. If the manager's salary is added to them, then the average salary is increased by, then the average salary is increased by rupees 100. What is the manager's monthly salary? What is the manager's monthly salary? Number 1, rupees 2,000. Number 2, rupees 2,400. Number 3, rupees 3,600. And number 4, rupees 4,800. See here, this is an example of average where the information regarding the employee, salary of employee and the manager is given here. The average monthly salary of 20 employees is rupees 15,000. If the manager's salary is added to them, then the average salary is increased by rupees 100. What is the monthly salary? What is the manager's monthly salary? Simple example it is. यहाँ पर हमें 15 एम्प्लॉय के 20 एम्प्लॉय के सैलरी का एवरेज दिया गया है. The average of employees salary is rupees, कितना है वो 1,500. एवरेज का अगर फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे तो क्या होगा? एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ सैलरीज. या फिर हम डायरेक्टली यहां पर लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं हम? सभी एम्प्लॉयज का टोटल सैलरी कितना होगा फिर 20 एम्प्लॉयज का? 30,000. Therefore, total salary of employees will be
नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है 20 और उनका एवरेज आया है 1500, दैट इज इक्वल टू 30,000 विल बी टोटल सैलरी ऑफ 20 एम्प्लॉयज। 20 एम्प्लॉयज का टोटल सैलरी कितना होगा? 30,000 होगा। अभी यहां पर क्या हो रहा है? मैनेजर का सैलरी ऐड हो रहा है। लेट सैलरी ऑफ मैनेजर बी एक्स। लेट द सैलरी ऑफ मैनेजर बी रुपीज एक्स। अभी मैनेजर का सैलरी अगर ऐड होता है तो क्या होगा? एवरेज सैलरी इज गोइंग टू इंक्रीज बाय रुपीज 100। 100 से एवरेज सैलरी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और यहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हो जाएंगे फिर? 21, बिकॉज वन एम्प्लॉय इज इनटू एडेड। मैनेजर इज ऑल्सो एम्प्लॉय, मैनेजर ऑल्सो वन ऑफ द एम्प्लॉय, so his salary, if his salary is added, then the number of employee will also increase from 20 to 21. Therefore total of new salary will be, therefore total of new salary will be, क्या होगा? पहला कितना था टोटल सैलरी? 30,000 और उसमें क्या हो जाएगा? मैनेजर का सैलरी ऐड हो जाएगा। मैनेजर का सैलरी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। नाउ एवरेज सैलरी इज इंक्रीज बाय रुपीज 100। एवरेज सैलरी इज इंक्रीज बाय रुपीज 100। नाउ एवरेज सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय रुपीज 100। मतलब कितना हो जाएगा? पहला कितना था एवरेज सैलरी? 1500 प्लस 100, दैट इज इक्वल टू रुपीज 1600 विल बी द एवरेज, विल बी द एवरेज। देयरफॉर वी यूज हियर फॉर्मूला अगेन, एवरेज इज इक्वल टू टोटल ऑफ सैलरी अपॉन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। यहां पर एवरेज कितना हुआ हमारा? 1600। टोटल ऑफ सैलरी 30,000 प्लस एक्स अपॉन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 21 अपॉन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 21। 21 will go to the multiplication here, 1600 into 21 is equal to 30,000 plus x. It comes 33600 is equal to 30,000 plus x, and therefore x is equal to, we get 3,600, which is nothing but the manager's salary, which is nothing but manager's salary. ये sorry 3,600 sorry 3,600 will be the monthly salary of manager. Got it? समझ में आया क्या? Next example we'll see here. Next example is one simple example we see here. Find the average of rupees 950, rupees 0.50, rupees 8.50,
and rupees 5.50. Simple it is. Simply we have to add them. Solution. ऐसे भी एग्जांपल्स होते हैं, हमें इजी लगता है. 9.5 plus 0.50 plus 8.50 plus 5.50 divided by कितने ऑब्जर्वेशंस है? 1 2 3 4. So we'll divide it by 4. It comes, इसको हमें ऐड करना है ठीक से. 9.50 plus 0.50 plus 8.50 plus 5.50. 0 0 0 0 5 5 5 5 20 20s are 0. ओके, डेसिमल पॉइंट देना. ये एडिशन बहुत बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते. यहां पर आपको 0.5 भी दिया है तो उसका मीनिंग क्या लेना है? 0.50. या फिर ये इट इज इक्वल टू ऑल्सो 0.500. यू कैन पुट एनी नंबर ऑफ जीरोस. उसके आगे हम 0 पुट कर सकते हैं. जितने हमें यहाँ पर कम होते हैं उतने वहां पर पुटअप कर सकते हैं. नाउ 2 plus 9 11, 11 plus 8 19 plus 5 24 divided by 4, that is equal to 6 is the answer. ओके, सिंपल एग्जांपल्स है लेकिन पॉइंट का एडिशन हमें कंफ्यूज कर देता है. तो सीधा हमें कितने भी अच्छे से एडिशन आता हो डेसिमल पॉइंट का, हमने इस तरह से उसको लिख लेना है और बाद में उसे कैलकुलेट करना है. द नेक्स्ट इज द example number 3. The average age of 2 children and their father is. The average age of 2 children and their father is 17 years. And the average age of children and their mother is. And the average age of children and their mother is 15 years. If the father's age is 36 years, if the father's age is 36 years, what is the mother's age? What is the mother's age? Options are number 1 32 years, number 2 28 years, 3 30 years, and number 4 22 years. Very simple example it is. Very easy solution. First of all, read the problem carefully. Here 2 children and their parents, mother and father's age relation is given here. The average age of 2 children and their father. हमें चिल्ड्रन का एज पता नहीं है दोनों का भी, तो हम उसे अज्यूम करेंगे लेट ए बी द एज ऑफ ए एंड बी बी द एज ऑफ चिल्ड्रंस. यहाँ पर हमें फादर का एज दिया है 36 इयर्स और मदर का एज हमें फाइंड करना है.
तो हमारे पास तीनों की एज नहीं है, दो चिल्ड्रन की एज नहीं है और मदर की एज नहीं है, फादर का एज दिया गया है, लेकिन इंटर रिलेशन बिटवीन द चिल्ड्रंस एज and father's age and interrelation between the children's age and mother's age is given. So first of all we assume that let A and B be the age of children's and M be the age of मदर का एज हमने क्या सपोज किया, m. अभी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वी हैव टू फ्रेम द इक्वेशंस हियर. अभी सबसे पहला कंडीशन क्या दिया हमें, द एवरेज एज ऑफ टू चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज 70. मतलब a प्लस b प्लस फादर का एज क्या है 36 अपॉन 3, इसका एवरेज हमें दिया है 70. कितना दिया है एवरेज 70. a प्लस b प्लस एज ऑफ द फादर डिवाइडेड बाय 3. 3 से क्यों डिवाइड हुआ है, बिकॉज देयर आर 3 scores, 2 children and 1 father is there. So a plus b is equal to 17 into plus 36 is equal to 17 3s are 51. And therefore value of a plus b will get here 51 minus 36, that is equal to 15. नंबर 1 इसको हम देंगे यहाँ पर. From the first condition we get the value of a plus b, that is equal to 15. Now what is the second condition here? From the second condition the average age of children and their mother is 15. अभी मदर और चिल्ड्रन का एवरेज एज है 15. सो फ्रॉम सेकंड कंडीशन वी गेट हियर a प्लस b प्लस m अपॉन 3 इज इक्वल टू 15. कितना है उनका एवरेज 15 है. सो विल गेट हियर a प्लस b प्लस m इज इक्वल टू 15 3s are 45, but we have the value of a plus b which is here. Therefore a plus b is equal to 15 plus m is equal to 45, and therefore m, that is the age of the mother, will be 45 minus 15, that is equal to 30 years. Got it? This type of questions will be there. Interrelation between the age, interrelation between the weights, marks will be there, average, उसका average दिया होगा, और regarding that questions will be there. Okay, so this is about the statistic. Now today we stop here. Thank you very much.